everyone. Welcome to Grade Up, India's number one trusted brand for ESE, GATE and PSU. Myself Sanjay Rathi, ex-IAS, और हमारे साथ हैं शालिनी जिन्होंने गेट 2021 में 18th रैंक अचीव की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट शालिनी फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम ग्रेड अप टीम. Thank you, sir. Now, please tell us something about yourself. Hi everyone, I'm Shalini. I'm from Hyderabad, Telangana. Currently, I'm in my 4th year and I'm from Osmania University. Yes. Okay. Then, what was your motivation to appear for GATE 2021? Actually, in my 3rd year, I decided to prepare for GATE exam. Everyone was going, getting ready for either placements or MS in abroad. So, but then my motive was to stay in India itself right from the beginning. So Okay. I saw GATE as a good choice for me. So I started preparing for GATE in the 3rd year itself. Okay, 3rd year onwards. Good. At that time, that third year was eligible. You are in 3rd year or final year this time? I'm in the 4th year right now. I was not eligible to write in 3rd year. Okay. This facility is available to students from this year onwards. Yeah. It is a good opportunity. Yes. Yes, na? Because Okay, you'll get to know about the paper and you won't get stressed for the second time. Okay. You'll get So- used to the environment. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो शालिनी ने जो बात आपको बताई ना कि what was the right time, तो that is simply from 3rd year onwards. अगर हम 2nd year से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास काफी मोटिवेशन है तैयार करने के लिए और आप रैंक अचीव कर सकते हैं. ओके. और 3rd year से तो आपको सिंसियरली आपको मोटिवेट होना होगा और गेट की सिंसियरली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी ताकि फाइनल ईयर आते आते तक आप सिंगल डिजिट नहीं तो 2 डिजिट रैंक तो लेकर आना है. राइट. इसके लिए आप कोशिश कीजिए. बिल्कुल. अब हम आते हैं शालिनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्लीज डिस्कस योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन डिटेल. When I was in college, I didn't get much time to prepare. So I used to spend around 2 hours a day at least. Then mostly I completed my preparation in the lockdown itself, because I had ample amount of time during the holidays. Most of the classes were online, so I had enough time. So first I used to get perfect with the theory, and then I used to go for problems. And after that, I used to solve previous year question papers. And if I'm not feeling comfortable in any topic, then I would go for textbooks. Okay. Which some standard textbook or Yeah, any standard textbook. I used to solve problems in the standard textbook, and if suppose I for example in EDC I didn't feel comfortable in optoelectronics that part, so I solved few problems from the textbook for that topic. Okay. तो देखिए जैसा इन्होंने बताया शालिनी ने, लॉकडाउन पीरियड, राइट, एंड दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शालिनी, आई थिंक सो. यस. तो Yes. इन्होंने सफिशिएंट टाइम लिया लॉकडाउन का और उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ली. बहुत लोग उसे नेगेटिव ले रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव खबरें अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. सेम सिचुएशन लास्ट ईयर की, सेम सिचुएशन इस साल भी है. अब आपको है कि इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है. अगर आप घर में पैक हैं और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो कंटेंट अवेलेबल है उनका भरपूर यूज कीजिए. और आपके सामने एग्जांपल है जिन्होंने 18th रैंक अचीव की है थ्रू दिस कॉन्सेप्ट. यस. तो ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट फॉर कंटेंट. यस शालिनी. Yes. Definitely, no? Yeah. So my next question, what would you suggest about the important topics and study material like books and other things for GATE exam? Yeah, firstly you have to concentrate on the subjects that are easy. Something in which you can score more marks, like control systems, networks, analog electronics, and signals and systems, digital electronics. You have to be thorough with these 5 subjects. If you're thorough with these subjects, then you will be able to achieve good marks in other subjects also.
and like if networks is important, signals and systems is important for communication systems. If you want to learn communicate, so you have to be perfect in these 5 at least. Then you will be easily able to. And if you are perfect in mathematics and numerical ability also, then you will be able to score easily around 50 to 60 marks in UP. Then if you are perfect with good at like at least you have practiced some problems in communications and EMTL, then you will be able to score very well in GATE. So like as I already told, if you're not comfortable even after listening to the classes and even after solving problems, then then try to solve more and more problems. Try to solve new models so that you will get acquainted with different kinds of models. Okay, definitely. Because in a very simple language, we have to solve number of questions from previous year papers, number of questions from standard textbook, and then first of all go through what basic subjects. Yes, get the command over what basic subjects like network, signal and system, digital control system, EMFT, and then enter into what core subject like EDC, analog, communication. तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है ना बहुत ही सिंपल, हम लोग सालों से ये बात बता रहे हैं और अब तो आपके सामने रिजल्ट है जो शालिनी आपको इन्फॉर्म कर रही है कि कैसे रिजल्ट्स आते हो। हम बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ सर आप लोग हर साल एक ही बात बोलते हैं और हजारों बच्चे पता नहीं फॉलो करते या नहीं करते। मैं आपको बता दूं, गिने चुने स्टूडेंट्स बस उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और ये रिजल्ट्स लेकर आते हैं, राइट। तो रिजल्ट्स बोलता है और आपके सामने जो बात हो रही है वो रिजल्ट्स की बात हो रही है। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, खूब सारे क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन बनाना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट आते हैं कि हमें कैसे बनाना है, क्या करना चाहिए या क्या पैटर्न है, क्योंकि सिलेबस अनलिमिटेड है। विदाउट क्वेश्चन हमें कोई आइडिया नहीं लगता कि हम कैसे इसे सॉल्व करें। तो शालिनी, ये तो आपने काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, थैंक्स। एंड अब मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सिंपली व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? Yeah, like some subjects, obviously everybody will feel like there will be one subject for every student which is difficult. Yeah, even I face the same difficulty. Like I used to feel EMTL is like somewhat difficult, and even few topics in communication. So even after solving many problems, again, like I was not that confident. Even after solving textbooks and all, I used to feel that I used to have that feeling that I'm not perfect in this subject. So actually what mistake I did was I didn't solve problems which were related to like the GATE standard. Like GATE is basically he gives you a question which you can solve either in less than 2 minutes. Mostly there's some trick that you need to find out. But in the process of learning more and more, I made a mistake of solving problems which were somewhat conventional, something like the time-taking problems. Maybe that would be useful for someone giving like the mains exam of engineering services. But then it's not the right one for GATE. So I made such mistakes. You have to solve problems which are related to the GATE pattern, something which has some trick in it, something which can be solved in less than 2 minutes at least, like that. And also, like I used to feel demotivated at times, when I used to get less marks in test series, or whenever I was not able to solve problems like that. So then, I tried to overcome those difficulties and continued my preparation. देखिए यहाँ पर इन्होंने सब बातें बता दी। We have limited time. We are not having the infinite time. Right? It is not possible to go through each and every type of questions. If suppose we are focusing on GATE, then we have to solve question like that, tricky questions. Yes, right? And we have to solve that particular question within 2 minutes. ये एक नया मैसेज है आप लोगों के लिए। देखो इन्होंने एग्जाम निकाला है और इनकी बातें हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करती है। और देखिए समझदार होना इशारा ही काफी होता है कि हमें अपने प्लान में क्या चेंज करना है। तो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। ऐसे क्वेश्चन चूज कीजिए जो आपसे 2 मिनट में बन जाए। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप वो ट्रिक सर्च कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समटाइम्स हम टेक्स्ट बुक में एंटर करते हैं, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिए जिन पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो शालिनी, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो सिंपली you are a grade of super student? Yeah? Yes.
So how did you land in a grade up? Like I came because I was preparing through online platform itself, so I came to know about GradeUp through their YouTube channel. So Okay. then I found, like, I saw a few videos and I found the content very interesting, and it was very useful. So then I decided to take this. Okay. So please tell us about what did GradeUp help you in your preparation? Yeah, So what is the of role course. of GradeUp in GATE Basically, you preparation? have to like for GATE exam, you have to be very strong at your basics, and for that, firstly, you have to study the theory very well. And for that, you and GradeUp lectures at GradeUp are really good. They mainly focus on your basics, and when your basics are strong, then you will be able to solve any kind of problem. It's just about practice. So they focus more on basics and try to solve and try to motivate the student to face any kind of problem that they'll have to face. And they prepare their preparation strategy is such that you will be able to crack any question easily. Okay, that's nice. And then something about silly mistakes. So simply, what are the mistakes that you might have made during your preparation? So please guide Yeah, silly students mistakes. about the Like silly everyone, mistakes or mistakes and each and everything about that. yeah, every student surely makes silly mistakes. Even I did the same. Like even after telling myself that I shouldn't do any silly mistakes, at least I should try to minimize them in the next exam. Even after that, I used to make some or the other. Like in a hurry, I used to like while solving itself, instead of writing plus, I used to write minus, or instead of multi, I used to forget like if there's some into 2, then I used to skip it in the next step. So I used to make such silly mistakes. So if you are making a mistake like while calculating or something, then I would recommend to write, like if you're writing the problem, I would recommend to write the solution somewhat clear, because anyways you won't be consuming much space. So whatever you're writing, write it in a neat manner so that you won't skip it. Like if you're writing it in a clumsy manner, then while going to the next step, you won't be able to understand what you wrote in the previous step. So you might miss out on something. At least you will be able to minimize such kind of mistakes. And it is better to read the question twice before attempting it, so that, and write down the data like as you read the question, so that you won't there won't be much chances of making silly mistakes like based on the like data in the question. Like sometimes we miss out on the data in the question, so it would be better useful in minimizing such mistakes. And never be in a hurry to solve a question. Like if you are sure that you will be you know everything about the question, only then attempt it. If you're not able to recollect something about it, then it's better to avoid it and do it at the end, because sometimes in out of that pressure also we write something else instead of what we know. So it's better to do it when your mind is calm. डेफिनेटली तो इस बात को मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब हम लोग भी पेपर बना रहे हैं तो जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हम अगले क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि यस नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा। तो यहाँ पता चला जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वहां पर आपने गलती कर दी। और शालिनी ने एक बहुत ही सिंपल सी बात बोली, यूज रफ पेजेस लाइक फेयर, राइट। तो आप उसे रफ पेजेस का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रफ और रैंडमली वहां पर लिखें। तो आपने रैंडमली लिखा तो आप अपने ही कैलकुलेशन को चेक नहीं कर पाएंगे, और आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो वहां आप दोबारा पहुंच भी नहीं पाएंगे कि मिस्टेक क्या होगी। टाइम लिमिटेड है। और मुझे भी एक नया मैसेज यहाँ से मिला शालिनी से। इन्होंने कहा कि हर क्वेश्चन को, हम लोग बोलते हैं रीड क्वेश्चन केयरफुली, शालिनी ने कहा रीड क्वेश्चन केयरफुली ट्वाइस। यस, दैट इज द मैसेज फ्रॉम यू। तो इन्होंने बहुत ही, मतलब देखिए ये छुपे रुस्तम है, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी सबक लिया है। इनसे मैसेज लीजिए। ये नई जनरेशन है जिन्होंने इन एग्जाम्स को टॉप रैंक के साथ क्रैक किया है, राइट। ये मेरे लिए भी एक इंफॉर्मेशन है, मैंने भी कुछ आज नया सीखा इनके साथ कि कैसे एग्जाम्स को लेना है, और ये बात आप जरूर गौर कीजिएगा। डेफिनेटली कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, और अगर वहां आपने सिली मिस्टेक कर दी तो आप वैसे भी आप अपॉर्चुनिटी गंवाने वाले हो। तो जब आप 3 घंटे के लिए एग्जाम में फोकस कर रहे हो ना, 3 आवर्स आपको वहां रहना है। 1.5 साल 2 साल हमने उस 3 घंटे के लिए मेहनत की है, और अगर आप 3 घंटे में एक सिली मिस्टेक करते हैं तो आप फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
100% सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि उसे कम किया जा सके। ओके, तो शालिनी, जस्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हमारा गेट एग्जाम नजदीक आ जाता है तो लास्ट मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यस, तो व्हाट वाज योर लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर गेट 2021? In the last month, I focused on writing full-length mock tests, and then I used to revise. I used to aim at least writing one mock test per day, and then during the rest of the day, I used to revise my short notes, like whatever the formulae were there. I used to revise those. At least I tried to revise 3 subjects in a day, like that. All the formulae of at least 3 subjects. So I didn't touch like any other new topics during that time. I'm mainly focused on giving tests and then revising whatever I know. That's it. You are worried about that last topic, or that was the strategy? Yes. No, yeah, you worried about the new topics in the last month, or it is not possible to cover new topics in the last month? What was your strategy? No, I didn't worry about what I haven't covered. I just focused on what I knew and tried to be perfect in that itself. So at least if I don't forget what I have learned, then I can score well in the exam. If I'm worried about what I didn't learn, then I won't be able to be perfect in that topic like in just 1 month. So it's better to focus on what I know. Definitely. तो देखो, ये मतलब इन्होंने सिंपल सा मैसेज दिया है, लास्ट मंथ रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, राइट? अगर आप बार बार नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या आपका नहीं हुआ है, हमेशा देखो सिलेबस ना पूरी जिंदगी आप पढ़ोगे तो भी इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर 100% सिलेबस। कुछ ना कुछ टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जो नए हैं, और देखिए 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो कभी आएंगे ही नहीं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, रैंडम टॉपिक्स है। हम लोग हमेशा मैसेज देते हैं, ये आपको पता तो होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। वी हैव टू अवॉइड व्हाट रैंडम टॉपिक्स। और लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, अवॉइड कीजिए न्यू टॉपिक, जो आप पढ़ चुके हैं उसमें परफेक्शन लाइए। अगर आप वहां पर बना नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, और आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, या जो आपको क्वेश्चन आया उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा याद रखिए, टेक्निकल फील्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार पढ़ा हो बैंक पीओ की तरह और आप गए और वहां पर क्वेश्चन बना लेंगे। आपको थॉरो नॉलेज चाहिए, राइट? यू हैव टू गेट द कमांड ओवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये मैसेज बहुत ही शानदार है आप लोगों के लिए, इसको केयरफुली लिसन कीजिए और इसे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में इसे लेकर आइए। शालिनी, एक और क्वेश्चन आता है, जब आपने ग्रेडअप यूज किया है डेफिनेटली, तो व्हाट फीचर ऑफ द ग्रेडअप ऐप वाज मोस्ट यूजफुल फॉर यू? Especially the previous year, like you can attempt the previous year question papers like an exam also. So I felt that was very useful. Like they also provide detailed solutions of previous year questions. So, and we all know that previous year question papers play an important role in GATE preparation. So when you can give those papers like an exam, then you will be able to assess like how far you have like how much you have learned and how far you are in your preparation, like how much you have to learn more and where you are going wrong. Like if you're not able to do some previous problem itself, then you need to rethink like, why am I not able to do something which I must know? So obviously if at the same time, if you're good at your preparation, it boosts your confidence. So I like that feature very much in the GATE app. And also you can post your doubts, like whatever doubts you have in the app, and which will be answered by either the faculty or some other student. Like, I like this. I used to say in each and every class that doubt clearing session is the most important part of any course, right? No study, no confusion. More study, more confusion. So there should be some authentic platform to clear what doubts. So I think on a GradeUp, doubt clearing sessions or doubt resolution part is a good one. Yes. Okay then. Any special advice for GradeUp users for GATE 2022? Any special advice from your side? Yeah, like whoever is like all the GATE aspirants, like 2022 aspirants, just keep in mind that you first get your basics strong,
and that will be taken care of by grade up lecturers anyways. So and then practice more and more, and like never demotivate yourself, never tell yourself that I won't be able to do this, like am I really capable of this. Just go with your preparation, don't think about the results, because if you think about the result, then automatically you will lose your confidence. So if you're not you may have a feeling like, am I really capable of doing this? So never think of that, just go with your preparation, and try to put as much as you can on the final day. Never pressurize yourself on that day. It's very important to stay calm on the exam day, because whatever you have learned in all these months, you have to put it on a paper. Then that is really a difficult job, and if you have to do that, then your mind needs to stay calm. You should not try to incorporate any negative thoughts into your mind. Just stay positive and keep preparing. That's it. डेफिनेटली एकदम डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स. सिंपली हमने गीता में भी सुना है, कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो. ये सुनते सभी हैं, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर पाते हैं ये मैटर करता है. इन्होंने ये चीज अप्लाई की और इन्होंने ये रिजल्ट्स दिया है. तो थैंक्स शालिनी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से, ग्रेड अप की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करें, अपने टारगेट अचीव करें, और जो भी आपने सोचा है वो आप पाएं. और अभी ये जस्ट एक लिटिल स्टेप है, आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है. तो आप लगातार लगे रहेंगे और भी अच्छे रिजल्ट्स की हम आपसे उम्मीद करते हैं. डेफिनेटली. थैंक यू फॉर सेशन. थैंक यू.